Okay, so 21. Let E be ellipse, this ellipse, and C be the circle. Let P and Q be points number. Then, okay, तो P Q 2 points है. Q lies inside C but out. Seriously. So P क्या है ये point? So like 1/9 and then 4/1 है. The outside ellipse है and inside circle है because yeah, and in fact दोनों दोनों inside circle रहेंगे. So inside both C and E, no. Q lies inside C but outside no. Wait, outside E, right? Q का क्या है? So it's the P at least तो outside, yeah, मतलब P तो outside the ellipse है ना, तो P outside E है. Right, so D looks correct. D is correct. Q lies outside both C and E. नहीं, Q lies inside both C and E. So D is the correct answer. Next question. 22 is limit x tends to infinity of this thing. Okay, so it's like square root of x फिर square root of x plus जो भी है. Not good. इसको रैशनलाइज करें तो क्या आएगा, like square root of x upon, इस पे इतना ध्यान क्यों देना, बिकॉज वी नो जैसे से x इट्स इंक्रीजिंग, व्हाट विल एक्चुअली हैपन इज कि या लाइक मेजर जो कंट्रीब्यूशन है वो इस x से आ रहा है, ये स्क्वायर ऑफ जो भी है उससे कुछ भी नहीं हो रहा है. सो जस्ट रैशनलाइज करो एक बार इसको, और नीचे एक काम को डायरेक्ट स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x लिखते हैं बिकॉज ये सब जो है ये पार्ट नहीं है, ये इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा है. सो जस्ट दिस एंड देन ये हो जाएगा, ये वाली चीज माइनस, ओह गॉड सच में ये बहुत लंबा चला था ना, स्क्वायर ऑफ x प्लस जो भी है. ओके, तो एक रेडिकल गया, फिर दूसरे रेडिकल को हटाने के लिए वापस एक बार अपने करना पड़ेगा. सो नीचे वापस क्या आएगा, स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x. तो स्क्वायर कर रहा हूँ बेसिकली इसका. आई मीन दैट इज द थिंग राइट, इट इज अप्रॉक्सिमेटली दैट मच. सो या वो करने के लिए अपन ने वैसा किया, तो वो एक बार मर गया. ओके ऑसम. और फिर क्या, सो ये दो रेडिकल गए, ये सब्ट्रैक्ट जाएगा, जस्ट बेसिकली स्क्वायर ऑफ x प्लस स्क्वायर ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ x. एक और बार तो यहाँ पे 3 आ जाएगा राइट. तो ये एक और रेडिकल गया, इज जस्ट x प्लस स्क्वायर ऑफ x माइनस स्क्वायर ऑफ x विच इज जस्ट x. सो यहाँ पे सिर्फ x आएगा. सो ये आ जाएगा लाइक x पावर 3 upon 2 and square root of x power 3 basically. Square root of x power 3 upon square root of x plus square root of x power 3. It's like 1 upon 2 की power 3 which is 1 upon, that should be the thing. So 1 upon 8 होना चाहिए था इसमें, but apparently ऐसा नहीं हो रहा है. It should be just 1 upon 8. 1 upon 4 कैसे आ गया इसमें? That doesn't make any sense. It should just be, yeah, square root of x power 3 right? So it should just be 1 upon 2 की power 3. So 1 upon 2 की power 3 क्यों नहीं है आखिर? कुछ गड़बड़ हो क्या अपनी? देखो वो सिर्फ तो सब कुछ काटा पीटी करने के बाद में एक थोड़ा सा अजीब हो रहा है ये. अच्छा, एक रेडिकल गया, क्या आ गया, एक्स प्लस, हाँ वो सब. सो फिर दूसरा रेडिकल क्या था, एक्स स्क्वायर ऑफ, अच्छा वो सब, फिर माइनस स्क्वायर ऑफ एक्स. नहीं वो तो एक रेडिकल ऑलरेडी चला जाता है. अच्छा फिर सिर्फ एक्स बचेगा. वेट, एक रेडिकल गया तो क्या आ गया, वो एक्स तो मर गए, जस्ट दिस थिंग स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स प्लस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स माइनस स्क्वायर रूट ऑफ एक्स राइट. अच्छा, जब दो रेडिकल जाएंगे तो फिर ये गया ये गया, और ये सिर्फ ऐसा बच गया. और फिर अपने सिर्फ दो रेडिकल हटाने हैं एंड देन यहाँ पे अपना स्क्वायर ऑफ एक्स आ जाएगा. सो दो रेडिकल हटाने के लिए दो बार अपने रैशनलाइज करना पड़ेगा लाइक दिस थिंग. और फिर यहाँ पे जो बचेगा दिस इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ एक्स. सो ये लाइक इट्स एक्स अपॉन 4x. सो जस्ट 1 अपॉन 4. सो बी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. अब ये मत पूछना कि वो स्क्वायर ऑफ एक्स एक्स की कंपैरिजन में छोटा कैसे हुआ, वो एक्स कॉमन निकालो वो तुम कर लोगे. 23. 23 is if A is perpendicular to B and P is perpendicular to non-zero scalar such that P times R vector plus R vector dot D vector times A vector equal to C vector, then R vector is equal to, oh अच्छा P एक स्केलर है फाइन, और A और B परपेंडिकुलर है. ओके एंड दिस इज हैपनिंग एंड व्हाट इज R vector बेसिकली. ओके अंडरस्टूड. सो दिस इज लाइक R vector dot B vector. अच्छा एक काम करें फिर डॉट B vector का डालते हैं, दैट जस्ट मींस लाइक p times r vector dot p vector. यहाँ पे तो जीरो हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू व्हाट, इट इज इक्वल टू c vector dot b vector right. Yeah but wait a second, you just got r vector, oh cool. तुम्हें r vector dot b vector मिल गया. तो एक काम करो, इसको p से मल्टीप्लाई करो, just like p square r vector plus, so p r vector dot p just like this thing, so c vector dot p vector and that is with a vector that's equal to what, pc vector.
Yeah, you got r vector in that case. Like r vector is just equal to pc vector माइनस सी वेक्टर डॉट, हाँ वो हो जाएगा. सो पी सी, ओके अब तो डिवाइड करना ना, फाइन. माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर, लाइक सी वेक्टर अपॉन पी स्क्वायर माइनस सी वेक्टर डॉट बी वेक्टर टाइम्स ए वेक्टर अपॉन पी, राइट. वेट, नहीं ये पी चाहिए और ये पी स्क्वायर चाहिए, सॉरी. ओके दिस इज द थिंग. सो ये सही लग रहा है. या लुक्स करेक्ट. सो इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 24. आप ऐसा अब ऐसा लग रहा है ना कि अपन प्रॉपर फॉर्म में वापस आ गए. 24. X has four friends ABCD. He wants to invite one or more of them at dinner. If he invited the person and X are sitting, okay, invited persons and X are sitting around a circular table. चार दोस्त है, X खुद है, so पांच लोग हुए basically. Number of arrangements in which C and D, if both are invited, are sitting together. अच्छा उनको एक ग्रुप कर डालो. ओके सो सी डी एक ग्रुप है, तो फिर अब कितने यूनिट्स बचे? सिर्फ चार यूनिट्स है. लाइक ए, yeah, like A, B, X and C, D ग्रुप. सो चार इसमें यूनिट्स रहेंगे. अच्छा तो अपने कुछ ये सर्कुलर टेबल है ना, फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर इज थ्री फैक्टोरियल अरेंजमेंट्स रहेगी अपने यूनिट्स की. बट देन जो सी डी यूनिट है उसको अपन उल्टा भी कर सकते हैं, राइट. सो वो सी डी या फिर डी सी दोनों भी चलेगा, राइट. लाइक क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज अपन अलग अलग गिन रहे हैं कि क्या? आई थिंक अपन अलग अलग गिन रहे हैं. सो जस्ट टू टाइम्स ऑफ दिस थिंग, मतलब ये टू टाइम्स ऑफ सिक्स. वेट दैट्स नॉट द थिंग, उसमें गड़बड़ होगी. इट्स लाइक फोर फैक्टोरियल अपॉन फोर ऑफ कोर्स, बिकॉज हाँ. I mean, yeah, like they are sitting with us. अच्छा if invite, right, so ये तो तब रहेगा जब सारे सर्वर ने को इनवाइट कर दिया है. फिर उसके बाद में अपन ओके ओके समझा समझा. सो इट कैन बी पॉसिबल कि अपन ने इनफैक्ट इनवाइट ही ना किया हो. हाँ, वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा तो फिर अपन कैसा कर रहे हैं, यानी इट्स लाइक दिस थिंग कि तुमने या तो सी डी लिया होगा या फिर डी सी लिया होगा, और फिर अब तुम इसको कनेक्ट कर रहे हो तो मैं इसके अंदर मतलब चीज़ें डालनी है, राइट. ओह ओके, दिस इज लाइक वियर्ड. सो तुम किस किस को चूज करोगे और फिर उसको अरेंज भी करना पड़ेगा, राइट. या सो तुम्हें चूज तो करना ही पड़ेगा, उनको तुम्हें परमिट भी करना है. ओके सो पहले तो अपन क्या कर रहे हैं, क्या क्या लोग बचे हुए? जस्ट ए पी और एक्स बचा हुआ है, अब को इसमें ही डालना है. सो परमिटेड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? थ्री पी वन पहले तो एक इंसान अच्छा जीरो रहा तो एक्स खुद तो होगा ही ना हमेशा, राइट. एक्स खुद तो होगा, तो एटलीस्ट एक्स को तो लेना ही पड़ेगा, राइट. सो क्या क्या हो सकता है? एक्स हो सकता है, फिर एक्स साथ में एक और बंदा हो सकता है. ओके वेट, अपन को एक्स हमेशा लेना ही है इन दैट केस. इट्स नॉट गुड. ठीक है, किस वाइज करना पड़ेगा. सो टू टाइम्स, सपोज अपन ने एक्स सिर्फ अकेला ले लिया, देन इट्स लाइक एक ही तरीका है. प्लस एक्स के हाथ में अपन कोई और ले लिया, एक्स ए हो गया, एक्स बी हो गया, तो दोनों में दो दो, फोर फोर बेस, राइट. फिर प्लस तीनों ले लिए, तीनों लिए एक्स ए बी, तो अपन लास्ट टाइम मिला था जस्ट थ्री फैक्टर. हाँ तो फिर जस्ट सिक्स वेज बस, राइट. थ्री फैक्टर वेज ऑफ कोर्स. सो या दैट इज द थिंग, मतलब और क्या हो सकता है? So just two times of, ये अजीब है यार. just 11 22, that doesn't make any sense. How can that be the thing? 22 seriously? बट ये तो नहीं हो सकता, कुछ गड़बड़ कर रहा हूँ ना मैं. ओ ओके ओके, सो ये तो तब है जब अपन ने सीडी को दोनों को इनवाइट किया. सपोज अपन नहीं किया, ओ सो सिर्फ सी और सिर्फ डी भी हो सकता है. ओके सो इसमें टू नहीं, यहाँ पे चार चाहिए इन दैट केस. सो फोर टाइम्स लाइक 44 और समथिंग. अच्छा वो भी नहीं है ना, नॉट गुड. ओके अच्छा, और एक और, किसी को नहीं किया इनवाइट. सो सीडी में से, ओह दैट वुड बी वेरी वियर्ड. वेट, फोर फ्रेंड्स के इसको इनवाइट किया, देन इफ बोथ आर इनवाइटेड, वन और मोर ऑफ देम, राइट. सो आई सी. ये तो तब होगा जब तुमने वैसे एटलीस्ट एक को इनवाइट किया. सपोज तुमने उनमें से नहीं किया इनवाइट, सो राइट, ये तो वैसे हो गए. तुमने सी और डी में से कोई भी इनवाइट नहीं किया, देन क्या होगा? सिर्फ एक्स तो हो नहीं सकता, एक्स तो कोई और लगने ही वाला है अपने को, राइट. सो या लाइक वन वे, अगर तुम से एक्स, ओके नॉट वन एक्चुअली, सिर्फ एक्स तो हो नहीं सकता, राइट. सो दो लोग, राइट, दैट वुड मीन लाइक एक्स और ए. बट इसमें क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का कुछ सेंस नहीं रहा, बिकॉज हाँ राइट, डजंट मेक एनी सेंस.
So इसमें सिर्फ दो तरह से हो सकता है. ओके प्लस दो नहीं बिकॉज तुम x ओके अपन ने अज्यूम किया कि कोई भी इनवाइट नहीं किया देन जस्ट टू वेज. और क्या तो ये तो दो लोग हो गए तो तीन लोग भी चाहिए x और a और b लाइक टू फैक्टोरियल जस्ट अनदर टू बेसिकली बिकॉज राइट सर्कुलर सो हाँ it's like 48 in that case so b is the answer. Next question 25 25 मरो सर दो मरो 25 क्या है division of tan of ये तो अपन सारा कर चुके राइट सो tan of log of x tan of log of x upon 2 tan of log of 2 upon x so 1 upon x हाँ ठीक है तो ये जो है d natural log of x and oh like I have seen that somewhere I guess natural log of x natural log of x upon 2 अच्छा natural log of 2 ये तो कांस्टेंट है यार इसका कुछ अपने को देखना नहीं है और फिर इसका क्या tan of log of x and natural log of x upon 2 it's like this thing tan of natural log of x upon 2 can be like tan of natural log of x minus natural log of 2 which is tan of natural log of x minus tan of natural log of 2 upon not going good but hey whatever natural log of x tan of natural log of 2 let's see क्या होता है राइट ओके फिर यहाँ पे आ जाएगा वो tan of natural log of 2 बाहर निकाल दिया ठीक है तो यहाँ पे क्या बचा tan of natural log of x और d natural log of x so first you would need like secant square or something ये तो बड़ा अजीब हो रहा है I was not expecting this I was definitely not expecting this should not have happened wait a second oh you can make this negative oh yeah so you can write it like this thing tan of I know अजीब लगेगा but whatever tan of natural log of x tan of natural log of 2 minus natural log of x and then I know ये negative में आ गया but hey come on bear with me pi minus natural log of 2 इनको ऐड करो क्या मिलता है pi so इनका जो प्रोडक्ट है just do the sum oh oh yeah so हाँ so इसका इंटीग्रेशन with respect to natural log of x that is equal to natural log of secant of x so okay secant of natural log of x इसका इंटीग्रेशन इसमें नेगेटिव आ जाएगा बेसिकली like negative natural log of secant of natural log of x okay so of 2 minus actually okay like this and iska just ये तो constant is just but yeah it's just a constant like minus tan of natural log of 2 times natural log of x well yeah plus some kind of constant that looks correct so हाँ क्या कौन सा आंसर सही लग रहा है ओके ये क्या है अच्छा ये जो पूरी चीज है यू कैन राइट लाइक दिस थिंग नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ नेचुरल लॉग ऑफ एक्स प्लस नेचुरल लॉग ऑफ सीकेंट ऑफ ओके वो वन अपॉन आएगा लाइक यहाँ पे कोसाइन वगैरह करना पड़ेगा व्हाटएवर इसको नेगेटिव में रखो फिर इन दैट केस नेचुरल लॉग ऑफ लाइक क्या आ जाएगा यहाँ पे 2 अपॉन एक्स राइट बट ओके नेचुरल लॉग ऑफ 2 अपॉन एक्स नेगेटिव कर दो सो ओके सीकेंट है यार इवन फंक्शन ओके और क्या है माइनस tan ऑफ natural log of 2 times natural log of x plus some kind of constant so जब हम natural log पूरा ले लेंगे तो क्या क्या आने वाला है एक तो पहले x पावर tan natural log of 2 आएगा जो कि मुझे इसमें दिख रहा है और वो नेगेटिव में रहेगा सो या दिस लुक्स करेक्ट और फिर यहाँ पे secant of natural log of x upon 2 that makes sense and then so फिर b is the answer next question 26 26 is if a, b, c, d, e are positive real numbers such that a plus b plus c plus d plus e equal to 15 and this is equal to fine value of a is equal to ठीक है so positive real numbers है हाँ दिख ही रहा है okay ठीक समझा समझा मैं समझा so it's like 2 times of b upon 2 करना पड़ेगा 3 times of हाँ समझ गया so right like 15 is bigger than or equal to कितने आ जाएगा इसमें 1 plus 2 plus 3 plus कितने 15 आ जाएगा oh तो फिर इसका बेसिकली तुम yeah so like 1a फिर 2b upon 2 फिर 3c upon 3 and so on so like upon 15 is the a and bigger equal to gm which is the 15th root of just 1a फिर यहाँ पे b upon 2 का square so like b squares वो जो तुम्हारी चीज है गंदी सी नीचे okay d power 5 और फिर यहाँ पे जाएगा like 2 power 2 3 power 3 4 power 4 5 power 5 right and this is thing so you are saying
Yeah, so like 1 is actually gonna equal to this thing, right? Because am is gonna equal to gm. So this means ये जो चीज है 15 power ना दो यार. So ये जो पूरी चीज है it's less than or equal to this thing, which is how much? It's like 2 power 2 plus 8, 10, 3 power 3 times 5 power 5, I guess, which is like 10 power 5 times 5 power 5 times 3 power 5. I hope you can. Yeah, 120 times. Okay, 120 cube times 50. 50. Very, very weird. Why is that 120 cube? अच्छा इसमें cube 3 use करिए, right? So 2 power 3 and then 5 power 3. It's like 3 times of 40. So for 40 just need what? Last वाला ये अच्छा था ये चीज, right? This is, you know, 3 times 4 times 5 times 2 की पावर 3 times, ओके 2 तो मैंने कंज्यूम कर दिया, राइट? हाँ, जैसे कि क्या तुमने 8 की पावर 3 यानी कि 3 पावर यानी 2.9 तुमने अंदर दिया, राइट? तो दिया तुम्हारा तुम्हारा 2.9 क्या जस्ट टाइम्स 2 टाइम्स 5 बेसिकली 5 पावर 2 सॉरी. सो हाँ 50 आ जाएगा भाई. या दैट मेक्स सेंस. सारे इक्वल है which means that a is equal to b upon, हाँ वो हो जाएगा just equal to 1 all of them. So a equal to 1, b equal to 2, c equal to 2. ठीक है. So this is what 1 square plus 2 square till 5 square, which is n times n plus 1, 2n plus 1 upon 6. 55 is the answer. Next question. So D is the answer. Next, 27. Number of solutions of the equation tan x plus secant x is equal to 2 cosine of x in, okay, so till the cosine x से multiply करो, which is basically this thing 1 plus sine x is, oh god, seriously, oh seriously, it's 2 cosine square of x. तो काफी अलग हो गया. Fine, just 1 plus s is equal to 2 minus 2s squares, like 2s squared plus s minus 1 equal to 0. So s plus 1 times 2s minus 1, because yeah, that will work out, is equal to 0. So s can be negative 1 or s can be 1 upon 2. So we want in what? In negative pi to 2 pi. Okay, so negative pi से start कर रहे हैं अपन. नेगेटिव 1 यहाँ पे होगा एंड देन 1 अपॉन 2. अभी तो वेट करना पड़ेगा. जस्ट एक सोल्यूशन आया, फिर उसके बाद में ऊपर गए. यहाँ पे हमारे दो बार 1 अपॉन 2 होने वाला है. सो 1 प्लस 2 हो गया ऑलरेडी, राइट? सो तुम्हारे पाई तक पहुंचने पे ऑलरेडी 2 हो गया. फिर बाद में यहाँ पे ओके, तो फिर पाई से 2 पाई में वापस एक आएगा बिकॉज नेगेटिव 1, लाइक प्लस 1 once again. Yeah, I mean that is the thing, right? Like 3 plus, sure, that is the thing. So just four solutions. So these the answer. Next question. I mean और क्या हो सकता है? कुछ और है ऐसा जो हो सकता है? Like cosine x cannot be zero because यहाँ पे secant x involved है. So that is next question. 28. Uh, if the eccentricity of the hyperbola is okay, square root of 3 times the eccentricity of this ellipse, then the value of alpha is इसकी eccentricity. Oh god, seriously. So that's y squared secant square alpha. Like x square upon cosine square alpha plus y squared upon 1 is equal to some kind of constant जो भी है. So for instance, you just want, yeah, fine. So negative 1 upon c squared basically, because capital B upon A हमेशा अपन करते हैं. That's equal to 1 minus e squared. So e hyperbola squared, right? Okay. Equal to c squared. और ये अल्फा ही है हर जगह पे. ओके, और यहाँ पे क्या हो रहा है? और इसमें यहाँ पे कोसाइन स्क्वायर अल्फा है, राइट? सो कोसाइन स्क्वायर अल्फा, that's like, yes, so cosine square alpha is equal to 1 minus the eccentricity of ellipse squared, right? Okay, so eccentricity of ellipse squared is equal to 1 minus c squared, and then eccentricity of hyperbola squared is equal to 1 plus 1 upon c squared. And you are saying this is what? Eccentricity of hyperbola is square root of 3 times this thing. So this is equal to square root of 3. Okay, so 3, like 3 minus 3 c squared basically, which means that 3c squared minus 2, because yeah, like plus 1 upon c squared is equal to 0, right? Awesome. So what's the value of alpha? Like, okay, fine. 3c power 4 minus 2c squared plus 1 equal to 0. So like, that's weird. Okay, minus 3%, whatever. Yeah. Wait, if it's like factorizable already, then
वेट, नहीं ये कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें. दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. दिस शुड नॉट हैव हैपेंड. ओह गॉड. शिट. नहीं ये सही नहीं है. व्हाट इज द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस गाय? दिस डजंट हैव अ रूट. वेट, कुछ भी गड़बड़ हो गई. ये कैसे हुआ? Square root of 3 times. That must be like, okay, ये तो 3 times that होगा in that case. हाँ, that is just piece of point. वो छोटा वाला है, so of course that's gonna be the thing because लेकिन cosine square alpha of course. Yeah, that is the thing. That is the smaller one. So फिर यहाँ पे just that's e squared is equal to c squared. Sure. और यहाँ पे क्या ये चीज of course. Ah, that's like sort of 3 times of this thing. Right. So ये they should have really worked यार. कुछ भी गड़बड़ हो रही है इसमें. यहाँ पे निगेटिव तो भी चाहिए था एटलीस्ट. That's not there. So this is just plus one. What is this? इससे कोई solutions नहीं आएंगे. इधर तो नहीं आएगा एटलीस्ट. यूज करो फॉर्मूला. माइनस बी लाइक 2 प्लस माइनस स्क्वायर ऑफ p स्क्वायर जस्ट 4 माइनस ऑफ 4 इज. हाँ ठीक है ना, इसमें सॉल्यूशंस ही नहीं आएंगे. या लाइक this doesn't happen. This doesn't happen at all. Right. गड़बड़ होगी लगता है. I'm making some kind of mistake. Yes, I am. अरे यार यहाँ पे 1 upon okay ठीक है सब. So it's not negative 1 upon c squared, it's just c squared. Oh, so यहाँ पे सिर्फ c squared चाहिए. Okay, that was interesting. So just 4c squared is equal to 2, मतलब कि c squared equal to 1 upon 2. Right, so then alpha can be pi upon 4 negative वो जो भी. So pi upon 4, yes it works out. Next question, please the answer. Single correct, right? Next, 29. 29 is limit x tends to 1 upon 2 of tan of e power जो भी. x को 1 upon 2 plus x put करो, just tan of what? E power like 2h हो जाएगा ना यहाँ पे because yeah, minus 1 upon natural log of x, natural log of like 1 upon 2 plus h basically, and plus natural log of 2, so basically this thing natural log of 1 plus 2h. एक काम करो 2h को रिप्लेस करो h से because yeah, let's h से रिप्लेस करें. ये approximately h है, tan of h is approximately h as well, so like h upon h. Wait, 1 plus h is like, yeah, yeah, that is the thing. Just h basically approximately. So yes, it's just 1. This is equal to 1 actually. Okay, so a equal to 1, then this is like x cubed minus 3x squared minus 24x plus 8 plus 28 equal to 0. Okay, this has what? Okay, that's very weird. Minus 3x squared है, मुझे कुछ और चीज़ें चाहिए रहेगी. It's like x cubed minus 3x squared. I would need plus 3x and then negative 1 as well. So for that, यहाँ पे मुझे minus 27x करना चाहिए and plus 29 करना चाहिए. 0. So then let's just say x minus 1 is equal to u is like u power 3 minus 27 times u plus 1 because u minus x minus 1 is basically u. Okay, plus 29 is equal to 0, which means that u cube minus 27 u और यहाँ पे क्या minus 27 is plus 2 equal to 0, right? Yeah, interesting. 27 you are saying like 3 times of 9 बोलते हो basically. हाँ ठीक है, तो 3 times of 9 you would want 9 in some way. Directly solutions have been, we just figure out the thing, right? Yeah, इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव है like 3u squared minus 27 or something. हाँ फिर इसका कुछ भी प्रॉब्लमेटिक बनेगा. Anyway, कोई obvious solution है इसका. Let's put u equal to 3 or something. Bad feelings about this. Yeah, ऐसे काम नहीं करेगा, right? Just won't work like that. That was unexpected. A should be 1, and this is the thing. And yeah, that's what I got. So, well, okay. We'll just have to do the formula thing. So yeah, u cube plus alpha plus beta is equal to 27 unit, yeah, 3 times of 9u. So alpha plus beta क्या है? It's equal to 2, or alpha times beta, that should be equal to
that should be equal to 9. Wait, what? The addition 2 है and alpha times beta is equal to 9 for some reason. ये तो कभी नहीं देखा मैंने अभी तक. Oh, it's like alpha cube, sorry. But still, how do you get this? Cubes का sound 2 है and then somehow alpha times beta is 9. I don't think this is going correct. Right, मैंने ऐसा कभी नहीं देखा. One think about it. यार plus 2 आया for some reason. कैसे हुआ ये, कैसे हुआ? अरे shit. नहीं नहीं सही तो है यार. X minus 1 equal to u, so like this is just u plus 1, so yes, this should be the thing. This should really be the thing. माइनस में उठाया तो मुझे प्लस 1 डालना पड़ा. प्लस 3 उठाया तो माइनस 3 डालना पड़ा. या अब इसके आगे क्या? डिप्रेस क्यूबिक, आई हैव टू सॉल्व इट इन दिस वे, बट देन हाउ वुड यू नो कि इसके रियल रूट्स है कि नहीं है? लाइक वो 20 के माइनस 30 वाली चीज करो ना, राइट? सो इसका क्या होगा? इसका 20 माइनस, लाइक इसका बस डेरिवेटिव चेक करो. लाइक इसका डेरिवेटिव क्या था? 3u स्क्वायर माइनस 27. So basically like 3 times of u square minus 27 कर डालो. Square minus 9. 3 times of u minus 3 times u plus 3. So between negative 3 and 3 कुछ तो भी हो रहा है इसका, राइट? इसका चेंज हो रहा है कुछ भी. नेगेटिव 3 पे क्या हो रहा है इसका? लाइक ओके, नेगेटिव 3 पे नेगेटिव 27 प्लस 81 की पॉजिटिव है. उसके बाद में यहाँ पे दिस इज, सो एट 3 इट इज व्हाट? एट 3 दिस इज नेगेटिव, सो ये पॉजिटिव से नेगेटिव पे चला गया. यहाँ पे ये पॉजिटिव था, यहाँ पे नेगेटिव है, सो लाइक द कर्व इज समथिंग लाइक दिस, राइट? इसके बीच में एक रूट होगा और उसके पहले कभी ना कभी तो इंक्रीज हुआ होगा पॉजिटिव मोनिक. ओके जो भी है. सो हाँ, इसका मतलब क्या हुआ? 3 रूट यू के, सो 3 रूट एक्स के भी. So 3 real and equal. No, not equal. Distinct roots. 3 real and distinct roots. C is the answer. Next question. 1 real and 2 distinct roots. Kuch bhi. Next. 30. If the coefficients of x power 7 and x power 8 in the expansion of this are equal, then the value of n is equal to. Okay, x power 7 x power 8 equal. हाँ जो भी है. So like nc7 and then क्या आ गया पे 2 power. Just hate this actually. जो भी इसमें आया होगा दैट्स इक्वल टू जो भी इसमें आया होगा. बढ़िया, इजंट दैट? सो 2 से तुमने डिवाइड किया बिकॉज वो तुमने एक हटाया एंड देन तुमने एक x अपॉन 3 डाल दिया एक्स्ट्रा, राइट? ओके, या हाँ, बट वो x अपॉन 3 में x का तुम नहीं देख रहे हो पार्टिसिपेशन, इट्स जस्ट 1 अपॉन 3. सो या मतलब क्या हुआ कि nc8 इज इक्वल टू 6 टाइम्स ऑफ nc7. लाइक nc8 अपॉन nc7 क्या होगा? ncr plus 1 upon ncr क्या होता है? n minus r upon r plus 1. So n minus 7 upon 8, that's equal to 6. मतलब n equal to 7 plus 48, which is 55. So I guess C is the answer. Next question, 31. 31 is if A is equal to this thing and B equal to this thing, then okay, such that AB is a null matrix, then the following should necessarily be an odd integral multiple of 500. क्या है cosine square alpha? Oh god, seriously, क्या है चीज? Okay, sine alpha, cosine alpha, sine square alpha. How did this happen out of nowhere? X, you can like diagonalize this thing or something. And A times B is a null matrix. Interesting. Wait, what? It's null matrix. How does that happen? Okay, whatever. So the following should necessarily be an okay, odd integral multiple of pi upon 2. तुम्हें सारे देखने पड़ेगा यार, seriously. Okay, जो भी है. So ये वाला वेक्टर जो है इसमें जाएगा. Right. So cosine square alpha cosine square beta plus sin alpha cosine alpha. Then ये बहुत लंबा चौड़ा कुछ तो भी काम होने वाला. I don't like this. Yeah, I definitely don't like this. Okay, ये चीज 0 चाहिए for some reason. It's just going really really bad. चलिए इनमें से कोई ना कोई एक का डिटरमिनेंट तो 0 होना चाहिए, right? That's at least, yeah, that's a necessity. Wait, डिटरमिनेंट दोनों का 0 है fact because तो अपने आप हो गए इस तरह से. Should following should necessarily. Okay, cool. I'm wishing कि ये somehow like not exactly what I want. I just have 1 minus that and 1 plus that and whatnot.
It's one way to be thinking about it. Right, so तुम a को लिख सकते हो as 1/2 and then you just have this thing 1 plus cosine of 2 alpha sine of 2 alpha. It's like, wait, I think I know where I'm going with this thing. So 1 minus cosine of 2 alpha, यहाँ पे क्या sine of 2 alpha, right? Isn't that like 1/2 times the identity matrix plus this matrix, which is cosine 2 alpha sine 2 alpha sine 2 alpha negative cosine 2 alpha? And yeah, not exactly a rotational matrix though. Not good, not good. It's a symmetric matrix at least. वो तो भी अच्छा है. Uh, okay, interesting. Now what? So you want to do this times b. Hmm. I get what's happening is I plus a times I. इसको क्या a dash बोल दो please. I plus a dash times I plus b dash. That will be like I squared plus a dash plus b dash plus squared I होता है ना यार. Okay. Right. Plus a dash b dash and ये तो हो जाएगा. Then what about a dash times b dash? That is a problematic thing, isn't it? Because it's not a rotational matrix. अगर ये rotational matrix का काम करता then it would be so much better. It's not. But at least इससे तो better है ना जो अभी अपन देख रहे हैं. Anyway, yeah, this will be the thing. और वो 1/4 के बारे में भूल जाओ. This is basically a null matrix. That's what I'm saying. Okay, cool. So right, like identity matrix plus a dash plus b dash कैसा होगा? Like cosine of 2 alpha plus वो हो जाएगा यार. No big deal. It's not even a मैं इसको as a complex number भी represent नहीं कर सकता. It's just getting bad. और a dash b dash क्या होगा फिर? मेरे को ढूंढना पड़ेगा. So cosine of 2 alpha negative cosine of 2 alpha sine of 2 alpha sine of 2 alpha times sine of 2 beta sine of 2 beta sine of 2 beta negative sine of 2 beta. So पहले तो ये वेक्टर जाएगा इसमें, राइट. जो पहला कॉलम आएगा उसमें ये which is cosine of 2 alpha. Okay, fine. It's like, hey, it's like cosine of 2 alpha minus 2 beta, isn't it? फिर ये जाएगा. This is like sine of, oh god, I think I know where it's going. Although ये rotation matrix से नहीं काम कर रहा है, it's somewhat having similar properties. This is very weird. But this is not a rotation matrix, so why is it doing this thing? I don't know. Okay, whatever. और फिर क्या तो ये वेक्टर इसमें जाएगा, राइट. तो साइन 2 बीटा कोसाइन 2 अल्फा माइनस, हाँ, लाइक साइन ऑफ 2 बीटा माइनस 2 अल्फा हो जाएगा ना ये. ओके, दैट नाउ लुक्स लाइक अ रोटेशन मैट्रिक्स फॉर सम रीजन. और ये फिर इसमें घुसेगा. इट्स जस्ट ओके प्लस साइन 2 अल्फा साइन 2. ओके, नो, इट्स नॉट लाइक दैट एक्चुअली. यहाँ पे कोसाइन ही. ओके, समझा मेरी क्या गलत हुई. पहला वाला रो अच्छा था. ओह ओके, इसलिए गलत लग रहा है. ओके ओके, कूल, नाउ इट्स करेक्ट. तो ये इधर जाएगा. इट्स जस्ट yeah, basically cosine of 2 alpha minus beta. Isn't that like the rotation matrix basically? It is, really is. Awesome. So मतलब क्या हुआ कि, and although that is not exactly what I thought it would be, but जो भी है still fine, right? It's this thing, cosine of 2 alpha and then sine of 2 alpha and sine of 2 alpha. Negative cosine of 2 alpha. It's not like a I wish वो वैसा होता. What if I instead of 2 alpha I just put negative 2 alpha और then यहाँ पे negative negative आ जाएगा. Then maybe that's more manageable. Not exactly. Yeah, not exactly. जो भी है, I just have to do the thing. So basically 1 plus cosine of 2 alpha plus sine of 2 alpha. Sorry, cosine of 2 alpha, one second. Plus cosine of 2 alpha minus 2 beta, that is equal to 0. फिर similarly like, okay, 1 plus sine of 2 alpha plus sine of 2 alpha. Okay. This is not negative for some reason, but this is like negative. Okay. Then minus sine. Wait, what? ये सिमेट्रिक है, ये सिमेट्रिक है, सिमेट्रिक है. यहाँ पे भी सिमेट्री आ रही है, जीरो आ रहा है सच में पे. और ये तो नेगेटिव में आ रहा है. वेट,
So like suppose ये equal होते एक ही तरीका that both of these should be 0, which means like sine of 2 beta times 2 beta minus 2 alpha, that should be 0, which means 2 beta minus 2 alpha, that's like n pi. Oh, beta minus alpha is literally n pi upon 2. Okay, then C is the answer. Next question. इसमें थोड़ा और है, कुछ चीजें हैं, बट अपने को आंसर मिल गया था काफी. Next question. 32. 32 is the set of values of k for which the quadratic equation possesses roots of opposite sign is. Okay, 3x squared plus 2 times of k squared plus 1 times x. It's like k minus k squared plus 1. That is not good. Okay, k squared minus 3k plus 2 are same. Not a linear thing anymore. अच्छा ठीक है ना, possesses roots of opposite sign. Wait, then we don't care about this because वो already negative हो चुका है, right? ठीक है ना, negative वाला बड़ा होगा magnitude, whatever, doesn't really matter. Like discriminant should be positive, that's one thing, and then you should also have this thing like k square minus 3 plus 2, that should be negative. So k basically belongs to 1 to 2, and also क्या चाहिए अपने को, discriminant positive like k power 4 plus 2 k square plus 1 minus 4 तो मर गया, just minus 3 basically, plus 3k square plus 9k minus 6 bigger than 0, which means minus, okay ये पे k power 4 है, that's weird. Wait, what? Okay, minus k squared, ये अजीब हो रहा है, plus 9k minus 5 bigger than 0. क्या ये ऑटोमेटिकली हो जाता है हर बार? I don't know. This looks weird. Very weird. Okay, like it's, so जो भी अपने को मिलेगा, that's actually subset of 1 comma 2, right? And this looks good, this looks good. It's bigger than 3 upon 2. For what reason would that be the thing? Belongs to 1 comma 2, then this is getting weird. इसका अपन क्या कर सकते हैं आखिर? Somehow the derivative क्या है? What is the derivative of this thing? It's just 4k cube minus 2k plus 9. At 1, this thing is like 4 minus 2 plus 9, which is positive, and then afterwards it's also positive because, yeah, okay. इसका derivative क्या होगा? इसका derivative होगा 12k square minus 2. So throughout 1 to 2, ये जो चीज़ है, that's actually just positive, which means ये increasing है throughout, और ये initially positive था, तो like ये positive ही होगा throughout, which means कि ये increasing है throughout. So at 1, what is this going to be? Just equal to 1 minus 1 plus 9 minus 5, which is also positive. Oh, so ये अपने आप हो गया फिर positive. We don't have to worry at all. That was interesting. ये तो बढ़िया, अच्छा. So just हाँ, ये अपने आप positive हो ही जाएगा हमेशा, हमेशा. So that means 1 comma 2 is in fact the thing. So C is the answer. Next question. 33. Okay, if I equal to 1 to 6, okay, summation from I equal to 6 of these things I was x. Okay, what? Isn't that just pi upon 2 though? Like that is just pi upon 2, right? So pi upon 2 कितने 6 बार, this is, wait, what? Oh नहीं, यहाँ पे y आए हैं. Okay, okay, I should have seen that. हाँ, हाँ, okay, fine. Oh, okay, this is that kind of question. इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? इसकी मैक्सिमम वैल्यू है पाई अपॉन 2, और इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या है? पाई. तो इनका एडिशन लाइक 3 पाई अपॉन 2, 3 पाई अपॉन 2 6 टाइम्स. Yeah, I think actually it's 9. So of course both are its maximum value. मतलब कि क्या? All xi are just 1 and all yi are just negative 1. Okay. Then summation, okay, ये क्या होगा? I equal to 1 to 6 of xi, that is equal to what? 6. So 6 से negative 6. So you show 6 to negative 6 of x natural log of 1 to, हाँ ठीक है ना, दिख ही रहा है ये कि ये जो, ओके, दिस इज लाइक 1 अपॉन e पावर x, हाँ, तो ये इवन फंक्शन है, ये ऑड फंक्शन है, 0 हो जाएगा आंसर. सो 0 इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. ए 34. 34 is if okay, circle of variable radius is drawn to the point something something, if from point r length of tangents to this circle is independent of radius of the circle, then acha, so s value that's independent of that, right? Hey, we already got the formula for s when you have something that's like x minus, yes, like x minus for r basically x minus 2 times x minus 4,
plus y minus 3 times y minus 6. That is actually like, wait, these are just points. These are not diametrical points. Okay, this is very weird. These are not diametrical points, and like it's independent of the circle का radius. Interesting. Circle का radius इसमें matter नहीं करता. पावर ऑफ पॉइंट सेम है. ओह, देयर इज ओनली वन वे दिस कुड हैपन कि वो रेडियल एक्सिस पर है, मतलब कि ये पी क्यू लाइन पर है. आर, राइट. सो आर लाइंस ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल. नो, आर लाइंस ऑन द, नो, राइट. सो सी इज द आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. तो पी और क्यू के कोऑर्डिनेट्स क्यों दिए? ये तो लाइक बहुत ही abstract वाला क्वेश्चन था. इसमें तुमने पी और क्यू क्यों दिए मुझे? Okay, if A, B, C form a system of vectors T, okay, and P, Q, R form the reciprocal system of vectors, then this thing, L A vector plus M B vector plus N C vector times L P vector plus N is equal to what? Okay, just normal properties. So, you know, like A vector dot P vector is equal to 0 and A vector dot Q vector equal to, sorry, A vector dot P vector क्या होगा? 1 and A vector dot Q vector 0 and A vector dot R vector 0. Okay, using that basically. So इसका अपने dot लेना है, distribute करो, whatever, just like L squared plus, hey, I mean that's so easy, right? Just L squared plus M squared plus N squared. That was expected. So A is the answer. Next question. Because बाकी से तो like मर जाएगा ना. So wait, यहाँ पे Q और R थे, sorry. It's L squared plus M Q. Wait, no. अच्छा, ये Q vector है, sorry. Sorry for that. It should be just M squared. Okay, next question, 36. Let A and B be two fixed points and P be a point on the line something for which the location of P this thing is maximum. अच्छा, सो इसमें इसमें डाल के देखो लाइक क्या आ जाएगा. ये 6 + 4 - 1 विच इज पॉजिटिव, और फिर ये तो डालोगे तो इट्स नेगेटिव, राइट, एज एक्सपेक्टेड. सो ए और बी, लाइक, या सो ये जस्ट ए और बी ऐसे हैं फॉर सम, राइट, ओके. और पी इस लाइन पे कहीं तो भी है एंड यू वांट, ये डायरेक्टली ऐसे अपोजिट थोड़े रहेंगे, लाइक दिस थिंग. एंड व्हाट यू वांट इज कि AP minus BP maximum हो जाए, right? We know कि AP minus BP is like the same as this length minus that length. तो इसका रेसिप्रोकल लोगे A dash, right? So like तुमने यहाँ पे P लिया तो ऐसा रहेगा, which is actually bigger than this thing, triangle inequality. तो एक ही तरीका है that these should be co-linear, right? So basically A dash ढूंढो, ये ढूंढो कि लाइन पे कब intersect करता है, then you're good to go. Awesome. So A अपना क्या point? Uh, where did that A go? A is just 2, 0 पे को A dash चाहिए. About this line, about the line 3x plus 4y is equal to 1. Yeah, whatever. क्या था अपना, कैसे करते थे अपन? You want it like the dot, right? Yeah. So the dot product of a vector dot अपना n vector. So line पे जो अपन n vector use करते हैं, that would be that length. n hat use करना पड़ेगा in that case. So a vector dot n hat. क्या कर रहा हूँ मैं? नॉर्मली अपन ये 1000 बार कर चुके, जस्ट फॉर्मूला यूज करो, although दोनों सेम ही चीज है. Yeah. Okay, so क्या है फिर? x minus 2 upon a क्या हो जाएगा? 3 is equal to y, सोचोगी y upon 4 is equal to 3x plus 4y plus 4. ठीक है. So 6 minus like 5, 5 plus 4 is 9, 9 upon 5 basically. So तुम्हारा जो x रहेगा just like 2 plus 27 upon 5 or something. Yeah, and then y will just be 36 upon 5. Okay, awesome. और अपने को x और y मिल गए. Just want to figure out ये p क्या होगा. So for p of course 3x plus 4y equal to 1, और इस ये अपन लाइन तुम सकते हैं. So what you get, slope क्या है? What is the slope? Subtract that from there. Supposed to be what? 4 plus 27 upon 5. भाई वो तो नेगेटिव, वो नीचे आएगा. 4 plus 27 upon 5, and then yeah, we will subtract it with like 36 upon 5 plus 9 upon 2, right? So 5 से multiply करो like 36 plus 40, no, what, 10 से multiply करो in fact. So like this thing 70. This is going correct, right? I guess so. So 72 plus 45, because 5 से multiply upon, okay, so 10, मतलब फिर 40 आएगा. 40 plus 54, I guess. Yeah, this is what it's like. 9 हटा दो तो just 8 plus 5, which is of course just 13, and then this is
94 is like multiple of 30 or something. 94 and 30 मुझे नहीं लगा कुछ होगा इसका. 94 94 कहाँ पे देखा मैंने. 98 would be the thing, but then ये बड़ा अजीब है. Like it's 94 for sure. 94 is like okay 4 times of 2, so you want 8 and then like 4. Okay, so for 2 times of 4 8 and then like 14, so 47. So that's a 47. 47 is not going to 13. This is not going good. कुछ भी इतनी गड़बड़ हुई. कुछ भी इतनी गड़बड़ हुई, that is the thing. Yeah, like y coordinates ले लीजिए and then so लिखिए तो next class it's like 37 upon 5. This is like 36 upon 5. Okay, cool. और अपना b जो है उसको अपने करना है. It's just getting complicated. 37 upon 5 plus 9 upon 2. अपने को स्लोप निकालना है. इसमें इतनी कॉम्प्लिकेशन क्यों हो रही है? Then oh shit, y ये है, क्या कर रहा हूँ मैं आखिर. 36 upon 5 plus 9 upon 2 upon 7 upon 5 plus 2. So नीचे आएगा 47. Okay, that's different now for some reason. 47 upon 5 आएगा. वो 5 तो ऊपर भेज दो. Just 47 ऐसे आ गया, then वो ऊपर गया. It's just it's getting weird. 36 plus ये चीज 9 9 कॉमन निकालिए. Just 4 plus 1 upon like 5 upon 2. Okay. This is like 9 times of 13 upon 2 times of 47 basically. Doesn't make any sense. It's like 3. It doesn't make sense. ये तो गंदा हो रहा है, बहुत गंदा हो रहा है, right? Like how would we know? Maximum when this is happening, अपने को a dash मिल गया. Yes, but then वो जो a dash है वो काम नहीं. Oh shit, it should be negative of this. Okay, that's not actually just negative. It's negative 2 of that in fact. So यहाँ पे negative 18 upon 5 चाहिए. इसलिए गलत हो रहा था अपना. इसी मैथ में बोल चुका कि मैं काफी अब स्लो हो गया हूँ, but hey whatever. So that is 5, right? No, it's not 5. It's 25 because a squared plus b squared. Exactly. So actually ये होगा. Very different than what I thought. हमारा x क्या होगा? It's just 2 and then minus. What is this, like 324? This is just 54 upon 25. So क्या है ये? 50 minus that is negative 4 upon 25. And then y will just be 4 times. That's just negative. It's like 70% upon 25. So हमारा जो a dash is like this thing, negative 4 upon 25 and then negative 7 upon 32 upon 25. तो चलो फिर स्लोप निकालो. Right, 72 upon 25 minus 9 upon 2 upon 4 upon 25 minus 2 basically. Seriously, तो what is this thing? Like 9 times. बहुत लंबा चलने वाला है यार. करो 50 से मल्टीप्लाई इसको. क्या होता है ये? 9 times 16, right? Minus 9 times, so 50 से multiply just 25 over there. Upon 8. 8 minus 100. What? Why is that the thing? For some reason वैसा है. Okay, it's like 9 times. What is this? Just 9 times 9 basically, because yeah. And then upon what is this? 92, right? So 81 upon 92. अब ये अजीब हो रहा है. Just क्या गलत हो रहा है इसमें मेरा? This should not be the thing. कुछ भी गड़बड़ हो रही है अपनी. It's not making sense anymore. अब क्या गड़बड़ हो रही है इसमें? सही तो है यार. 81 upon 92 आया मेरा इस स्लोप की वैल्यू. सो इट्स नॉट यार. ये क्या वैल्यू से कुछ गंदे वाली वैल्यूज मिल गई अपने को. कुछ तो इतनी गड़बड़ हुई है, बट क्या?
वेट अपना 9 कैसे आया आखिर? हाउ डिड वी गेट 9 दो? 6? ओ ओ ऐसे यहाँ पे 5 चाहिए था, राइट। बस 6 माइनस 1 5। शिट, सारा पूरा पानी मिल गया। 1/5। चलो यार फटाफट करते इसको, to solve this thing. We have a lot of stuff to do. So क्या हो जाएगा ये? 2 minus 3/5 which is 10 minus 3 is like 7, 7/5 और ये right -4/5। अब तो कर लो सही से। So slope आएगा, what is that? That will be like 9/2 minus 4/5 upon 2 plus 7, 7 है नहीं क्या है? 7/5, okay, which is, so 5 times that is what? 5 times 9 is 45 minus यहाँ पे आएगा 2 यानी कि 8 अपॉन like 10 से मल्टीप्लाई करें 20, 20 plus 14 which is how much? 30 and then यहाँ पे क्या 7 upon 34. Huh? How did this happen? I have no idea. Anyway, this is equal to what? Y minus y plus 2 upon x plus 9/2, right? Okay, not going good. So like 37, उसको 2 से मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा उस तरह से। या सो मल्टीप्लाई किया 2 से, व्हाट डज दिस बिकम? कैसे 34 इज लाइक 74 बिकॉज 614। ओके यहाँ पे जगह 68, सो उधर भेजो 74x प्लस, ये कुछ ही कुछ नंबर्स नहीं है, ऐसा होना तो नहीं चाहिए था। वाई इज दिस हैपनिंग? जैसे कौन सा करेक्ट लग रहा है तुम्हें? ये तो करेक्ट नहीं लग रहा है मुझे। व्हाट अबाउट दिस वन? 3/2 एंड देन -7/8। डायरेक्टली गेस चेक करो, लेट्स सी इफ दिस वर्क्स और नॉट। अच्छा पहली बात तो ये इस लाइन पर है कि नहीं। सो 3 times that's like what? 9/2 फिर -7/2, that's of course 1, so it is on there। अब चेक करो कि इसको सेटिस्फाई करता है कि नहीं। सो y plus 2 that is 3/2 plus 2, right, which is like what 7/2 I guess, because yeah upon x so like -7/8 plus 9/2 which is just -7/8 plus, मुझे क्यों लग रहा है सही से नहीं होने वाला है। Bad feeling about this। Okay, this will be 4 times यानी कि 36 upon 8, फिर 8 के ऊपर which is 4 times of that, मतलब 28 आएगा यहाँ पे। So yeah, none of these करना पड़ेगा अपने को, because ये तो कुछ ही कुछ वैल्यू है, ये अजीब है। This should really not be there। या तो ये गलत हो रहा है या फिर उनका खुद का गलत हुआ है, because this should really just work out। इतना पूरा होने के बाद में भी काम नहीं करेगा तो यार ये क्या, कुछ गलत तो नहीं दिख रहा है मुझे इसमें। इज लाइक 28 और नीचे आ जाएगा, क्या आएगा नीचे? 29 doesn't work out। ये तो काम नहीं करेगा। What about anything else? अदरवाइज तुम्हारा क्या आएगा? 2 times of y plus 2 upon 2x plus 9। चलो करो इसमें चीजें पुट। Let's put this thing 2 times of 4 plus 2 is like what? क्या कर रहा हूँ मैं? 12 वगैरह नहीं, ये काम नहीं करेगा बिकॉज बहुत छोटा है ये, तो ये ऑलरेडी कोपरा है तो हाँ ये काम ही नहीं करेगा। व्हाट अबाउट दिस वन? नहीं नहीं, जस्ट मूव ऑन नेक्स्ट क्वेश्चन बिकॉज ये गलत लग रहा है मुझे। वियर्ड 37, मोस्ट लाइकली क्वेश्चन रॉन्ग है। या फॉर व्हाट लोकेशन ऑफ p is this minimum is maximum, right? We did the thing, then क्या गलत हो रहा है? Is this the maximum?
doing something wrong. Shit. अपन अभी तक मिनिमम ढूंढ रहे थे. Oh god. We would want this to be the maximum, not the minimum. This doesn't make any sense. But but wait. Maximum कुछ भी गड़बड़ हो रही है यार. मैंने दो पॉइंट्स ऐसे हैं, then like when is this distance the maximum to like shit. क्या गड़बड़ हो रही है? When is this going to be the maximum, huh? अपन ने जो किया, this was like yeah, it's bigger than or equal to this thing. So फिर जब वो equality होती है, that is when it's a minimum. इसका कोई maximum होता है क्या? I have no idea. इसका minimum मैं समझ सकता हूँ, but what about the maximum? Why does that even... Addition maximum, I get that. Addition maximize कर, I understand that completely, but then ये चीज कैसे? How do we do it? इसको अपने को maximize करना है. How? Subtraction maximize? Seriously, I don't see ये कैसे होगा. Minimize करना समझ सकता हूँ, but then wait. नहीं, wait. No, that is in fact like difference is bigger, right? Because this is bigger than or equal to this plus that. Oh, नहीं, less. Okay, अब हम मैक्सिमाइज ही कर रहे थे अभी तक. हाँ, कुछ भी. हाँ, अब हम मैक्सिमाइज ही कर रहे थे एंड अपना आंसर नहीं आया बिकॉज मोस्ट लाइकली क्वेश्चन करेक्ट नहीं है. एनीवे, नेक्स्ट क्वेश्चन 37. Number of ways in which 4 prizes can be given away to 8 students when a student can get any number of prizes is. Okay, 8 students को देना है. Any student can get any number of prizes. 4 prizes है. Okay. Wait, how do you even start this? 4 prizes, वो distinct है कि क्या? I guess they are distinct. Any number of prizes अपन देख सकते हैं. Okay, 8 students. हाँ ना, फिर like what's the big deal? It's 8 power 4 because हर एक क्लास में 8 choices. Yeah, हर प्राइस का में 8 choice है, just 8 power 4, right? और what? सारे प्राइसेस अपने यूनिक है ना? Then yeah, instruments भी अपने यूनिक ही होंगे. So right, like 8 power 4 is the thing. So B is the answer. Next question, 38. If y is equal to this thing, then dy upon dx is equal to 10 inverse of log base e और जो भी है. So like 10 inverse of नेचुरल log of x को अपन u बोल देते हैं अभी के लिए. So ये क्या हो जाएगा? 2 minus 3u upon 1 plus 6u. हाँ, दिख ही रहा है अपने को कि this will just be tan inverse of 2 minus tan inverse of 3u. और जो दूसरा वाला है वो क्या है? It's like 4 minus 3u upon 1 plus 12u. ठीक है, tan inverse of 4 minus tan inverse of 3u. और इसमें 1 upon है. Okay, this is weird. अच्छा, इसमें डिवीजन नहीं था. फाइन. So it's like 4 plus 3u upon 1 minus 12. So यहाँ पे tan inverse of 4 plus tan inverse of 3u आएगा. So हाँ, tan inverse of 12, sorry, tan inverse of 2 plus tan inverse of 4. इनको ऐड करो तो मर जाएगा, whatever. Which is like tan inverse of what? Okay, so why is this thing? Oh, like the ठीक है, 0 because it's a constant throughout. Next question, 39. 39 is the minimum value of f is equal to this integration is, so t integration of t minus x dx. Okay, dt from x is equal, x belongs to a real. Okay, fine. T minus x you are saying. When you want from 0 to 1, when you have left this thing. Okay, this is very weird. So assume, like first of all, अगर x bigger than 1 है, then तुम्हारा क्या हो रहा है इसमें? Just integration from 0 to 1 of t and then like t is between 0 and 1 minus x. It's like x minus t हो जाएगा नहीं? Right, which is xt square upon like x1 upon 2 because x upon basically. Right, and then minus t square upon वो जो भी है minus 1 upon 3 जो भी. So ऐसा हो जाएगा, which means like
बढ़ाते जाओ x को, तुम्हारी वैल्यू बढ़ती जाएगी. सो मिनिमम कब रहेगा? एट x इक्वल टू 1, विच इज लाइक 1/6. सो दैट जस्ट मींस 1/6 इज द मिनिमम वैल्यू एट दैट पॉइंट. ओके. फिर जब तुम्हारा x लेस देन वो रहेगा, देन दिस उसका नेगेटिव हो जाएगा ना. सो लाइक 1/3 माइनस x अपॉन 2. राइट. सो 1/3 माइनस x अपॉन 2 मतलब कि एट x इक्वल टू -1, सॉरी एट x इक्वल टू 0, सॉरी. सो 1/3 आ रहा है दैट केस, विच इज अपने को मिनिमम चाहिए, तो ये तो चला गया, तो काम नहीं करता. which means because like yeah, और तुम और उसको नेगेटिव करोगे तो ये बढ़ जाएगा. so you don't want that to be happening. so 1/6 हो सकता है अगर बीच में कहीं मिनिमम नहीं आता. एंड देन लास्ट बट द लीस्ट, इफ या तुम बीच में ब्रेक कर रहे हो, देन क्या? so you want this thing, uh, x, what was the thing, x t squared upon 2 minus t cube upon 3, uh, from 0 to x, right? And then you want इसका उल्टा, so like god, like from x to 1, right? So negative of this thing, negative of x t squared upon 2 minus t cube upon 3. So ये क्या हो जाएगा? It's just x cube upon 2 minus x cube upon 3 minus पहले तुम 1 पुट करोगे, एंड फिर तुम वापस नेगेटिव वो चीज़ पुट करोगे. लाइक इसमें 2 टाइम्स हो जाएगा ना ये चीज़ इसीलिए. So बस 1 पुट करो, it's what? Minus x upon 2 minus x, so like 1/3 of course. Okay, so this is like x cube minus, अच्छा ये जो है ये x cube upon 6 हो जाएगा basically. So yeah, right, like x cube upon 3 हो जाएगा ना, that is x cube upon 3 minus x upon 2 plus 1/3, that would thing. Right. Oof. So this is like what? X common ले लो, just 2x square minus 3 upon 6 plus 1/3. You want what? The minimum value of this thing. Okay, not good, not good. इसका डेरिवेटिव क्या होगा? इसका डेरिवेटिव होगा like 3x square upon, तो मर गया, you know, x square minus 1/2 इसका डेरिवेटिव. Okay, so like okay, so as ओके इनिशियली तुम्हारा नेगेटिव हो रहा है, तुम्हें मिनिमाइज करना है, तो अच्छा है नेगेटिव करते जाओ. एंड देन ये पॉजिटिव कब होगा? व्हेन यू हैव लाइक, सो x इज इक्वल टू 1/2 पे, टिल देन इट्स जस्ट नेगेटिव. सो x इक्वल टू 1/2 पे you will get a critical value. Just put that in there. So this will be what? 1/2 square root of 2, so 3 times 9 is 6 square root of 2 basically. Then minus square root of 2 is like minus 1/2 square root of 2. It's 1/3. Yeah, so A is now the next question. 40. 40 is, let Pn is a probability that n throws of a die contain an odd number of sixes, then n throws of a die contain an odd number of sixes. Okay, हर probability तुम्हारे पास 6 है, 6 लाने की. Okay, cool. Like odd number, that's all you're saying, huh? Huh, interesting. Okay ना, so क्या क्या हो सकता है तुम्हारे पास में? 1, फिर okay, just think on m number of sixes के लिए क्या probability चाहिए अपने को. अच्छा, you want like a recursion or something. Okay, cool, cool, cool. So n में, right? Oh, cool. So suppose तुमने को pn कैलकुलेट करना है recursion. So like first थ्रो में तुम्हारी 1/6 probability है, एक 6 लाइन देखो कि pn is equal to, so 1/6 probability कि तुम्हारा 6 आ जाए. and if that happens, तुम्हें अगले थ्रो में राइट, so like तुम्हारे अगले n थ्रोज में राइट लाइक even हो जाएगा. so probability की तुम्हारा even number of 6 आए basically. Okay. Interesting. So like qn ऐसा बोलो उसको. So qn is a probability कि तुम्हारे even number of 6 आए in n throws. So qn minus 1 बस n minus 1 throws बचे, right? और 5/6 probability कि तुम्हारा 6 ना आए, then just be n minus 1. And then similarly qn is equal to तुम्हारा अगर suppose right, so like shift हो जाता है ना, p n minus 1 plus 5/6 qn minus 1, right? So using these two, can you actually figure out key? Yes, like
seems interesting. I want Pn, so I want P completely in terms of P, nothing about Q. Okay, now what do I do? So you got that. ठीक है. Oh, I know. So Qn minus 1 is equal to 6 times of Pn minus 5 Pn minus 1, right? So like basically Qn is equal to what? 6Pn plus 1 minus 5Pn, right? That's what you got. So you got Q as a function of P, something like that. और फिर यहाँ से तुम्हें क्या मिल रहा है? यहाँ से मिल रहा है well 6Qn minus 5Qn n plus 1 if you डाल it's like n plus 1 whatever. Right, and then minus 5Qn is equal to Pn, right? Okay, so Pn is equal to पहले तो 6Qn plus 1 चाहिए, which is like 6 times of यहाँ पे n plus 1 डाल देते हैं. It's what? 36 36Pn plus 2 minus 30Pn plus 1, right? And then minus 5 times ये चीज, so Qn तो अपन already कर सकते हैं, minus 30Pn plus 1. Ooh, interesting. And बड़ा अजीब है ना. Yeah, this is okay. And then you just have plus 25 Pn. Okay, so Pn is equal to 36 Pn plus 2 minus 60. ये बड़ा अजीब हो रहा है यार. This is not the recursion that I thought I would get. Yeah, that doesn't make any sense. Odd number of sixes. This doesn't look very convincing. No, it doesn't. Nth rows of a tile contain an odd number of sixes. Like, ये कैसे हो सकता है? How can you do this thing? Like, ये कैसा combination? I don't get it though. Just don't get it. You can't get the thing by normal recursion method. ये तो सही नहीं हुआ. इसमें 2 step का recursion लग रहा है. Then okay, maybe that's not the best way. एक काम करो, directly Pn ढूंढ लो as a function of n, and then we'll think about it. कभी-कभी होता है. You don't want the recursion, you just want the actual thing. So, but ये तो बहुत लंबा हो जाएगा in that case. Let's actually check some values. Let's just say n equal to नहीं, मैं क्या कर रहा हूँ, ये तो बहुत गलत हो जाएगा ना. रिकर्शन कैसे काम नहीं करेगा. It won't work, unfortunately. Can be 6 and 5 is somehow it's like 6Pn minus 5Pn minus 1 is equal to 1. Okay. Of course, this just means this thing like Pn is equal to 1/6 plus 5 upon 6Pn minus 1. Okay, interesting. Like 5/6 already gave us 6 नहीं आएगा. And then suppose 6 आ गया, right? So yeah, then after that, this should not be correct here. This should just not be correct because why is there this 1/6? I don't understand. Then this should be true for all kinds of n values. This doesn't make any sense. ऐसा क्यों होगा? Why is this correct? And then what about this one? Pn equal to 2 times of Pn plus 1. Twice already. बढ़िया. Odd number of sixes. I mean, you can still have an odd number of sixes. What's the big deal? Right? So यहाँ पे ये probably 1 कैसे कि तुम्हारा 6 आ गया. Okay, first इसमें. Then what's the probability तुम्हारा? हाँ. फिर तुम्हें चाहिए probability that you just have like even. Oh, okay. This is not right. This is the thing. Pn is equal to. I should have done this from the start. 1 minus Pn minus 1. Even number of sixes probability क्या होगी? This. इतना पूरा मुझे करने की जरूरत ही नहीं थी ना. Yes, okay. Which means that like 6Pn is equal to 1 plus 4. हाँ ठीक है. So it's just
This one, D is the answer. Next question. For seriously, yeah. Okay, not next question because this is done. 40 questions, right? Okay. So I'll see you in the next video. Bye.